Hello students, today we will start our new chapter 3rd of It So Happened book, that's name is The Selfish Giant. Firstly, I will tell you the short summary of this chapter. This story is that of a giant. Giant means demon, Rakshas, his garden and the children who used to play in it. There was once a giant who had a beautiful garden. He had gone to visit his friend, and when he returned home after visiting his friend, he found that children used his beautiful garden as their playground. Their happy voices as they played there infuriated the giant. Infuriated means गुस्साना, आक्रोशित हो गया कि why they are using his garden for playing purpose. He was very angry at the children. He shunned them out of his garden. उसने अपने garden में से बच्चों को बाहर निकाल दिया. And built a tall fence around it and built a tall boundary और garden के चारों तरफ एक boundary बनवा दी. The children could not return to the garden as the seasons passed and the time for the spring to arrive came. The giant waited eagerly to watch his garden bloom with beautiful flowers. However, he waited and waited, but spring never came to his garden. Days passed by, and the giant grew worried and sad for his garden until one day he woke up in the morning to hear the laughter of the children and to see the touch of spring in his garden. The giant was very happy and he ran outside to play with the kids who had entered through a small hole in the fence. As he played, he noticed a small boy stuck on top of a tree. The giant very lovingly brought him down, and when he asked his name, the kid ran away. From then one every day, the giant waited for his little friend to come, but he never came. After a very long time, when the giant was old, he woke up in the morning and saw his little friend in his blooming garden. He quickly ran out, and the child told him that he was the Christ and had come to take him to heaven with him. The giant died peacefully, and his soul rested in heaven with God. This is the summary of your chapter. It's a very easy. When you read it, you understand it very well. Now I am starting our chapter, The Selfish Giant. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. It was very lovely garden with soft green grass here and there. Over the grass stood beautiful flowers like stars. When and there were 12 peach trees, and in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in autumn bore rich fruit. The garden was very beautiful. When the students came back from the school, after coming back from school, they went into the garden for playing purpose. The garden was very lovely. There was soft green grass, and there were beautiful flowers that were looking in the grass like stars. जो flowers हैं grass के अंदर इस तरीके से लग रहे हैं कि जैसे चमकते हुए stars. एंड उस गार्डन के अंदर कितने पीच ट्रीज हैं? 12 पीच ट्रीज that in the spring time broke out into delicate blossoms and pink and pearl. और वो ऑटम सीजन में उसके ऊपर फ्रूट लग जाता है. द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज, और जो बर्ड्स हैं वो ट्रीज पर बैठे हैं. एंड सैंग सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स.
जो बर्ड्स हैं उनकी सिंगिंग इतनी अच्छी लग रही है बच्चों को कि वो अपनी प्लेइंग को छोड़कर बर्ड्स की सिंगिंग को सुन रहे हैं. हाउ हैप्पी वी आर हेयर, एंड दे क्राइड टू ईच अदर दैट दे वर फीलिंग वेरी हैप्पी देयर. One day, the giant who was gone to visit his friend came back and saw that children were playing in his garden. He became very angry. He became very angry. He had been to visit his friend the Cornish ogre. Cornish ogre means a giant of Cornwall. यहाँ पर इस जाइंट को किससे कंपेयर किया गया है? कॉर्निश ऑगर से, कि जो हु हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years. व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया, ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. व्हाट आर यू डूइंग हेयर? देन ही आस्क्ड फ्रॉम द चिल्ड्रन कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस. ग्रफ क्या होता है? रफ वॉइस. ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपको नीचे गिवन है, देन यू हैव टू राइट एंड लर्न. एंड द चिल्ड्रन रैन अवे. जब जाइंट ने रफ वॉइस में, स्ट्रिक्ट वॉइस में उनसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो चिल्ड्रन जो है डर के मारे भाग गए वहाँ से. एंड ही सेड माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन. मेरा गार्डन सिर्फ मेरे यूज़ के लिए है. सेड द जाइंट, एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलो नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. कि मेरे अलावा इस गार्डन में और कोई भी नहीं खेल सकता. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल राउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड. तो एक चारों तरफ एक बाउंड्री बनवा दी, वॉल बनवा दी बड़ी सारी, और उसके बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया. ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूट. ट्रेस पासर्स मीन्स जो बाहर के लोग हैं, दे कांट एंटर इन दिस गार्डन. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट. सेल्फिश क्या होता है? स्वार्थी, मीन पर्सन, जो सिर्फ अपने यूज़ के लिए चीज़ों को यूज़ करता है. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ nowhere to play. They tried to play on the road. अब बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी. अब वो कहाँ खेलते थे? स्कूल से आने के बाद रोड पर खेलते थे. बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स. जो रोड था दैट वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट. दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर. when they lessons were over मतलब when they came back from the school, then they wander around the high walls that was built by the giant. जो giant ने अपने गार्डन के चारों तरफ एक बाउंड्री बनवाई है, वो उसी के चारों तरफ घूमते रहते हैं. एंड टॉक्ड अबाउट द, और किसके बारे में बात करते हैं? ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में, जहाँ वो पहले खेला करते थे. और क्या कहते हैं? हाउ हैप्पी वी वर देयर. हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम पहले कितने खुश थे जब हम जाइंट के गार्डन के अंदर जाकर खेलते थे. दे सेड टू ईच अदर. देन द स्प्रिंग सीजन केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स. कि स्प्रिंग सीजन जब आता है तब क्या होता है? चारों तरफ नए नए लीव्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, हरियाली ही हरियाली हो जाती है. और जो इसको देखकर जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, दे बिकेम वेरी हैप्पी. ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर. पूरी कंट्री के अंदर चारों तरफ कौन सा सीज़न आ गया? स्प्रिंग सीज़न. ग्रीनरी ही ग्रीनरी. बट जो जाइंट है, सेल्फिश था वो, इस कारण से उसके गार्डन में स्प्रिंग सीज़न नहीं आया, अभी विंटर सीज़न है. द बर्ड्स ऑल्सो डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट. बर्ड्स ने भी वहाँ गाना बंद कर दिया. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच.